हाय गाइस, दिस इज सुमन। वेलकम टू माय चैनल द राइडर्स डायरी। ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो से आप लोग को पता चल ही गया है कि मैं बाइक लेके कलकत्ता से वाराणसी आया हूँ और आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा कि आप लोग वाराणसी सिटी में क्या क्या कर सकते हो। और उसके लिए चलते थोड़ा फ्लैशबैक में। Varanasi is India's oldest city, located along the banks of famous river Ganga. It is a spiritual city where Hindus go to pray and wash away their sins. Taking a boat ride along the Ganges at sunrise is a must thing to do. A trip to the Ghats of Ganges will reveal countless sights that will remain with you long after you leave. An easy day trip from Varanasi is Sarnath. It is a place where Lord Buddha gave his first religious lecture. Varanasi is well known for its street food and chaat vendors. सुबह के चाय से लेके शाम के चाट तक एंड टेस्टी puri-sabzi जलेबी से लेके लस्सी मलाई सरबत तक, और सोने से पहले बहुत ज़्यादा फेमस बनारस का मीठा पान तो जरूर खाना बनता है। We tried almost every food in Varanasi. If you are in Varanasi, you cannot miss the Ganga Aarti or Puja in the Ghats. Every evening, just after sunset, lots of crowd gathers at Dashashwamedh Ghat to watch the prayer, which is the best thing to see when you are in Varanasi. जय गंगे ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता सो गाइस, थोड़ा सा आइडिया आप लोग को हो ही गया है कि आप लोग वाराणसी में क्या क्या एंजॉय कर सकते हो। और अदर देन दैट, इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो गाइस, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इसके साथ आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब का बटन तो आपको दिख ही गया होगा, उसको ज़रूर हिट कर दीजिए। और जस्ट उसके बगल में एक घंटी है, उसको तो दबा के जाना ही है, ठीक है ना। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया अबाउट वाराणसी, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी बात पे वीडियो ख़त्म करते हैं और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। सो बाय बाय गाइस।